अब माननीय टूरिज्म मिनिस्टर को आदरणीय एसपीओ की कमांडर द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। अब मैं मेजर विकुतो असुनी रिटायर्ड से अनुरोध करता हूं कि वे लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पंधरकर उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल जीओसी एसपीओ को सम्मानित करें। आदरणीय एमएलए श्री कृपुल विक्सु, एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आदरणीय एमएलए श्री केविपोती सोपी, चेयरमैन डीपीडीबी कोहिमा, आदरणीय इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल्स नॉर्थ मेजर जनरल हरिंदर सिंह माव, जीओसी 57 माउंटेन डिवीजन मेजर जनरल शुभंकर बासु, सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल मिसेस डिनियो एंड मिस्टर निसेली, कैप्टन एन केमुलर सिंह महावीर चक्र पोस्ट थॉमस के माता पिता और ब्रिगेडियर पीके सिंह कमांडर 44 माउंटेन ब्रिगेड को सम्मानित किया जा रहा है। अब मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएं। श्री तमजन इन्नालो, आदरणीय एसपीओ के कमांडर, सिविल और मिलिट्री प्रशासन के अधिकारी, वेटरन्स, वीर नारीज, वीर माताएं और सभी मौजूदा लोगों को दिल से मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का आज इस एक्स सर्विसमैन रैली में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ईएसएम रैली का जन्म 2008 के एक्स सर्विसमैन मूवमेंट से हुआ। ईएसएम रैली एक वार्षिक आयोजन बन चुका है जो कि वेटरन्स, वीर नारीज और वॉर हीरोज के वेलफेयर, मेडिकल एड, मिलाप और शिकायतों के जल्द समाधान के लिए एक मंच बन चुकी है। आज हमारे बीच चीफ गेस्ट माननीय गवर्नर श्री नंद किशोर यादव भी मौजूद है। माननीय गवर्नर का जन्म 26 अगस्त 1953 को बिहार के पटना शहर में हुआ। माननीय गवर्नर ने मगध विश्वविद्यालय से बैचलर्स ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की है। अपने शुरुआती समय से ही माननीय गवर्नर आरएसएस और एबीवीपी के संगठनों के कार्यों में भागीदारी निभाते रहे हैं। माननीय गवर्नर कई महत्वपूर्ण पदों में कार्यरत रहे हैं और 13 मार्च 2026 को नागालैंड के 23वीं माननीय गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। अब माननीय गवर्नर श्री नंद किशोर यादव जी को एसपीओ के कमांडर द्वारा सम्मानित किया जा रहा है।
Flag Captain of Indian Navy, Lal Song Yen Tonse, Director, Rajya Sainik Board, Nagaland से निवेदन करता हूँ कि वे ESM रैली को संबोधित करें। Honorable Governor of Nagaland, Sri Nan Kishore Yadav Ji, Honorable Minister Temchen Ima Along Ji, Lieutenant General S. Dandarkar, UYSM, Aviation, YSM, General Officer, Commanding 3 Corps, Major General Subankar Basu, SM, VSM, General Officer Commanding 57th Mountain Division, Major General HS Mavi, Inspector General Assam Rifle North, Brigadier PK Singh, Commander 44 Mountain Brigade, Colonel Ajit Singh Negi, Commanding Officer 7 Madras and all ranks, respected members of Legislative Assembly, civilian dignitaries, officers, and dear armed forces veterans of Nagaland. I, Veteran Navy Captain Lal Sung Lim Tom Singh, take this opportunity to thank the General Officer Commanding 3 Corps for organizing this ESM rally for the veterans of the armed forces. I thank you, sir, on behalf of the Directorate of Sainik Welfare and Resettlement, Khiam, Rajya Sainik Board Nagaland, and all veterans of Nagaland. I am extremely happy that I have got an opportunity to meet all of you again, and I'm sanguine that this ESM rally will be beneficial to all of us here. It is an opportunity to meet all comrades, relive memories, at the same time have our grievances addressed. Please do take this most of today to meet the representatives of your records officers, the Rajya Sainik Board, the ESM contributory health scheme, and other stalls, so that here for various departments of the government and other agencies. I also take this opportunity to address you on certain policies, welfare scheme of the Kendriya Sainik Board and the state government to Rajya Sainik Board. Firstly, center state welfare schemes. As you are aware, the center through KSB and the state government through the Rajya Sainik Board has numerous welfare schemes for our ex-servicemen. However, our ESM are not fully availing these welfare schemes. This could be due to ignorance of the welfare scheme or ignorance. For example, the Kendriya Sainik Board welfare scheme of assistance for education of children, widows of ESM. In the year 2021-22, only 12 personnel have applied for it. Then the Directorate and the JSBs started extensive outreach awareness programs. As a result, in this particular welfare scheme, the number of beneficiaries rose from this 12 to 184 in 2022-23 to 340 in the year 2023-24. 567 in the year 2024-25, and then as of today, as on date, 586 have already applied. If you are eligible, you must apply for those welfare scheme which is granted by both the Government of India through KSB as well as the state government. And you also have to inform other ESM about all this welfare scheme. You may come to the JSB for further information and assistance. As of this year, many welfare schemes have also been revised and upgraded. I would like to mention
Number one, penury grant. This is basically for the non-pensioners. It is increased from rupees 4,000 per month to 8,000 per month. Secondly, the CEA, the financial assistance for education of children and widows, that is from rupees 1,000 to 200 per month. And thirdly, marriage grant of 50,000 rupees to 1 lakh. Regarding the ex-servicemen contributory health scheme, as you are aware, there are no private hospitals empaneled with ECHS in Nagaland. The Directorate and ECHS have on many occasions liaised with the private hospitals for empanelment, but none have accepted empanelment. It is requested to the state government to kindly assist us for this. However, all government hospitals are deemed empaneled. Our ESM, ex-servicemen, can avail medical treatment and claim reimbursement of the expenditure. Next, I'd like to come to the Part 2 orders. It has been observed that many of our ESM have not done timely publication of the casualties in Part 2 orders. This leads to a lot of hardship to the families as well as the pension-related activities once the ESM pass away. Kindly have your documents checked and necessary corrections be made through your respective Jilla Sainik Board. Next, I would like to come to the registrations at JSP. A large number of ESM have not registered themselves with their respective JSPs. It is important to register at your respective JSP in order to avail your ESM identity card, welfare scheme, and also address pension-related issues. Unless you are registered at the Jilla Sainik Board, no benefits can be claimed. Online submission of claimants first. All your welfare claims through KSP are now processed online. Those of you who are not computer illiterate should approach the Jilla Sainik Board or the Directorate for any assistance. Last year, on 26th of July 2025, the National Legal Services Authority, NALSA, launched a scheme called NALSA Veer Parivar Sahayata Yojana 2025. The scheme aims to provide free and competent legal services to defense personnel, ex-servicemen, and their family members, resulting in the establishment of Legal Services Clinic at Jilla Sainik Board in association with Nagaland State Legal Services Authority. Subsequently, legal services clinics were established in all the Jilla Sainik Board. For any requirement of legal services, please contact para-legal volunteers of your respective Jilla Sainik Board or JSWO. Let us make full use of these services provided to us. I also want to highlight two very important points for our ex-servicemen. Firstly, in case of any issue or problem related to pension, welfare schemes, rehabilitation, etc. of the ESM community, it should be first addressed only to the Jilla Sainik Board, JSWO, and the Directorate. Secondly, kindly do not fall prey to or spread rumors. Any rumors or doubt or any issue should be clarified only from the Jilla Sainik Board or the Directorate. Now, we all are aware that we have an acute shortage of manpower in our department. Despite these constraints, work has not stopped, though it might take a little longer. I am hopeful that our state government will soon speed up the recruitment process against the advertisement of January 2025. I take this opportunity to request the state government to resume implementation of 5% reservation policy for ex-servicemen in government departments, and also to hasten the recruitment process for filling the vacancy in the Department of Sainik Welfare and Resettlement. I assure you all my department's wholehearted support and dedication, despite being grossly understaffed. Our doors are always open to the ex-servicemen, and you can approach us anytime with your problems. Once again, on behalf
of all the ex-servicemen and families of Nagaland, I thank the General Officer Commanding 3 Corps for organizing this grand rally. We are overwhelmed by the love, respect, and dignity given to us. Thank you. Jai Hind. अब मैं माननीय गवर्नर श्री नंद किशोर यादव से अनुरोध करता हूं कि वे हमारी वीर नारीज और गैलेंट्री अवार्डीज को देश के प्रति सेवा और समर्पण के लिए उन्हें सम्मानित करें. We now request His Excellency, the Governor Shri Nanda Kishore Yadav, to kindly present honors to our Veer Naris, Gallantry Awardees for their services and dedication to the nation. Veer Nari Srimati Nukyantila Au, wife of late Sepoy L. Loksang Yuba. Veer Nari Srimati Keshivi Sema, wife of Sepoy Hento Sema, Sena Medal. Veer Nari Srimati Wangpong, wife of late Nayak W. Lempa Konyak. Veer Nari Srimati N. Chumoni, wife of late Sepoy Igumo Lota. Gallantry Awardee Honorary Captain Imliakam Mahavir Chakra, retired. Gallantry Awardee Honorary Captain Leng Kopal, Sena Medal, retired. Thank you, His Excellency, the Governor Shri Nanda Kishore Yadav. अब मैं माननीय टूरिज्म मिनिस्टर से अनुरोध करता हूं कि वे 1971 वॉर वेटरन्स को सम्मानित करें. We now request our Honorable Tourism Minister Shri Damjan Inna Along to kindly honor the 1971 war veterans. War veteran Lance Nayak, TB Angami, retired. War veteran Naya Shukhaje Sema, retired. War veteran Lance Nayak Kaso Rengma, retired.
War veteran Lance Nayak Khaso Rengma retired. अब मैं माननीय गवर्नर, माननीय टूरिज्म मिनिस्टर, जीओसी स्पीयर को श्री क्रोपोवित्सु, श्री केविपोली सोफी एंड IGAR नॉर्थ से अनुरोध करता हूं कि वे ESMs को मेडिकल एड के तौर पे व्हीलचेयर प्रदान करें। Nayak Nikhoto Sema retired. Nayak I Shikatu Sema retired. Havaldar Makiba Sangtam retired. Sipoy Lunglen Dangba retired. Nayak Wet Tang retired. And Nayak Tiken Meta retired. Thank you to all the dignitaries for presenting the ESMs with medical aid. अब मैं GOC स्पीयर को से अनुरोध करता हूं कि वे एक्स-सर्विसमैन कम्युनिटी के प्रति सेवा, समर्पण और निष्ठा से काम करने के लिए स्पीयर को एप्रिसिएशन लेटर्स से सम्मानित करें। धन्यवाद सर। इंडियन आर्मी के तहत स्पीयर कोर द्वारा ESMs के लिए एम्प्लॉयमेंट हेतु कई कदम लिए गए हैं। इससे रिलेटेड सेलेक्टेड एक्स-सर्विसमैन को ECHS के अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रदान किए जा रहे हैं। Sipoy and Ngon retired. Corporal Akantim Ponganer retired. Sipoy Bensin Lotep retired.
Thank you, sir, for presenting the appointment letters to the selected ex-servicemen. अब मैं आदरणीय प्रेसिडेंट ESM लीग नागालैंड मेजर विकुतो असुमी रिटायर्ड से निवेदन करता हूं कि वे रैली को संबोधित करें. Respected His Excellency Governor of Nagaland, Minister of Tourism and Higher Education, General Officer Commanding Sri Corps, Inspector General Assam Rifles North, Director Raja Sainik Board, Commanding Officer 7 Madras, dignitaries, ex-servicemen from Army and Assam Rifles, ex-servicemen families, Veer Naris, widows, gallantry awardees, and everyone present here this morning. A very warm Tagara Raho greetings from Ex-Servicemen League Nagaland. Thank you very much, Commanding Officer 7 Madras and all ranks, for taking pains in organizing a mega ex-servicemen rally for us. And also a very special thanks and gratitude to our General Officer Commanding Lieutenant General Pindarkar for being an eye, an ear, and a guardian for our ex-servicemen community. We honor you for being approachable, physically being present with us, and extending help in all possible ways. God bless you. आज हमारा एक्स सर्विसमैन तरफ से सभी एक्स सर्विसमैन और परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग अपना बिजी रहते हुए भी इतना दूर से अपना काम घर वाले लोग को छोड़ के आप ये अटेंड करने के लिए जो आया, हम लोग बहुत खुशी है। और इतो इमान भाल एक सर्विसमैन रैली करा तमदे अपनी और मोई नहीं शिकले को नहीं वो इतो एक सर्विसमैन रैली तो मोई खान करने पूरी थके इंडियन आर्मी खान के विषय थैंक्स दिवो लगे और आहाला दी देवी आही थकेले अपने के विषय खुशी पावो ये ते मोई खान एक सर्विसमैन रैली ते आही बोले पड़ा तो मैं खान लगा एक सर्विसमैन लगा कि मन वेलफेयर स्कीम खान सेंट्रल गवर्नमेंट पर दिया से स्टेट गवर्नमेंट ना साइड पर दिया से इतो सब बुझिबले पारे आरो मैं खान लगा प्रॉब्लम्स खान मैं खान लगा ग्रीवेंसेस खान कि मन थगिलिबी यते मैं खान रिप्रेजेंट करबले पारे इटु करने नेक्स्ट टाइम दिबे कि मन एक सर्विसमैन रेले होई थाकिबो आपने सब के रिक्वेस्ट करे से कि कोऑपरेट करना आई थे बोले करने तो आज हमारा एक सर्विसमैन लीग नागालैंड तरफ से मैं मेमोरेंडम हमारा स्टेट का राज्यपाल सबको सौंपता हूँ. Request all to bear with me as I take some time to read out our memorandum. His Excellency Governor of Nagaland, subject Memorandum on long pending issues related to ex-servicemen of Nagaland. The Ex-Servicemen League of Nagaland respectfully submits the following grievances for your kind attention and consideration, please. These issues bears direct significance to the welfare, security, rehabilitation and employment opportunities for the ex-servicemen community in Nagaland. Number one, the vacancies in Raja Sainik Board, RSB. After the initial advertisement for interview of Raja Sainik Board vacancy on January 2020, the interview was conducted very late into December 2001 after a gap of 1.5 years. When the interview result was out, it was observed that the selection of candidates for officers and grade 3 and 4 staffs was found to be unethical and appointment was made through backdoor and illegally, which resulted in lots of litigation followed by intentional delay of appointed officers even after the court judgment verdict that has been served. The post vacancy of Joint Director Raja Sainik Board Nagaland was not advertised in any of the print medias or any official correspondence.
But presently, Joint Director has been unethically and illegally been appointed, and the state vacancy through the back door. That is in direct contravention to the rules, SOPs, policies of the Kendriya Sainik Board, New Delhi, Rajya Sainik Board, Nagaland, and against service rules laid down by the personal and administrative reforms, Nagaland. Additionally, the post of Deputy Director for the Kohima district is an officer whose service has been terminated on 31st May 2025, but yet illegally given extension on 17 September 2005 and still in service, not vacating the post. An advertisement published in January 2025 invited applications for vacancies under the Rajya Sainik Board for a total of 21 vacancies. But actual vacancy is 21 out of 50 authorized training, which we have got. More than 50% of our posts is vacant. Until now, the interview has not been held. However, after even more than a year, the selection process has not been initiated. This delay has severely affected the functioning of all the Zilla Sainik Board, that is in districts, which is currently operating without deputy directors and also with an adequate staff that is hampering the delivery and services. Second point is issue of gun licenses for ex-servicemen and protection from harassment. After the current suspension of the issuance of gun licenses by the state government, the ex-serviceman is having a problem facing employment opportunities for security services and as well as threats from the insurgent groups. The third point is reservation in state government jobs. We respectfully bring to your kind notice that the ex-serviceman community in Nagaland continues to be deprived of the rights accorded to them by the state government's own reservation policy, specifically the provision of 5% reservation in grade D and D, C and D services. The fourth point is non-conduct of Rajya Sainik Board meetings. As per the Kendriya Sainik Board norms, annual Rajya Sainik Board meetings chaired by the Honorable Governor and attended by the Honorable Chief Minister, Minister of States, Rajya Sainik Board representatives and the ex-servicemen of the state to deliberate on the amalgamated special funds meeting, which has not been conducted since 2020, sorry. Number 5 is empanelment of hospitals under ECHS. At present, because of the absence of empaneled hospitals within the states, it forces our veterans and their dependents to travel to neighboring states such as Assam, Manipur and Meghalaya for treatment. So it is earnestly requested that this matter be taken up on priority. The sixth point is recruitment in Naga regiment and the formation of additional battalions. Established in 1960, the Naga regiment was formed to address the long-standing demand of the Naga people for greater inclusion in the Indian Armed Forces and integrate former insurgents. However, over the years, it has been observed that the representation of indigenous Naga in the regiment has diminished considerably. And the third point is the existing service coordination committee, which is already existing, needs to be functional and operational on urgent requirement basis for skill development to ESM, review of educational policies on practical ground, schemes for ex-servicemen for self-sustainable development. Jai Hind and Tagraro. जय हिंद और तगड़ा रहो, तगड़ा रहो। गुड। माननीय सम्मानीय गवर्नर साहब श्री नंद किशोर यादव जी, सभी आदरणीय वेटरन, वीर नारी, वीर माताएं, माननीय पर्यटन मंत्री श्री तेमजम इमना अलोंग,
राज्य प्रशासन के सम्मानित अधिकारीगण, मैं भारतीय सेना की स्पीयर को और ईस्टर्न कमांड की ओर से आप सभी का इस एक्स सर्विसमैन रैली में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं खास करके गवर्नर साहब का आभारी हूं कि उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप आज इधर पधारे हैं। एक्स सर्विसमैन के साथ आप यहाँ आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड थैंक यू वेरी मच टू पर्यटन मंत्री जी, आप भी यहाँ आए और आपने इस रैली की शोभा बढ़ाई। मैं भारतीय सेना की तरफ से आपका सबका आभारी हूँ कि आप सब अपना कीमती समय निकालकर इस रैली में आप शामिल हुए, विशेष रूप में गवर्नर साहब। भारतीय सेना की गौरवपूर्ण परंपरा का पालन करते हुए हमने अपने वेटरन्स की देखभाल हेतु हर संभव सहायता प्रदान करने का दृढ़ संकल्प लिया है। इस उद्देश्य से इस एक्स सर्विसमैन रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में वेटरन्स, वीर नारी और परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। जिन परिवारों ने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्हें हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय सेना हमेशा उनके साथ खड़ी है। नागालैंड के वेटरन्स, वीर नारी और वीर माताएं हमारी भारतीय सेना का अभिन्न और सम्मानित अंग है। फॉर्मेशन स्तर पर हमने स्पर्श आउटरीच को बढ़ाते हुए स्टेशन हेडक्वार्टर जकामा में अपडेशन करने की फैसिलिटी भी साझा करवाई है, जिसमें ESMD के मेंबर्स ने काफी योगदान दिया है। मुझे आपको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भी ECHS पॉलीक्लिनिक में डेंटल चेयर ऐड की गई है, जिससे हमारे लाभार्थियों के लिए डेंटल सर्विसेज की भी उपलब्धता में सुधार होगा। इसके अलावा मेडिकल सर्विसेज को मजबूत कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ECHS पॉलीक्लिनिक कोहिमा के लिए एक समर्पित भवन के निर्माण कार्य भी अलॉट किया गया है। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आशा है कि इस वर्ष भवन का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। यह पहल हमारे सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। साथ ही ECHS पॉलीक्लिनिक जकामा में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, जिसका संचालन स्वयं पूर्व सैनिक ही कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट वेटरन से साझेदारी परियोजना के अंतर्गत हम पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार और उनके कल्याण के लिए नागालैंड राज्य के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। आप सब अलग अलग आर्म्स और सर्विसेज का विशाल अनुभव रखते हैं। इसी अनुभव का उपयोग आप लोग युवा पीढ़ी को प्रेरित करें और सभी समुदायों के बीच विश्वास बढ़ाने में कर सकते हैं। यूनिफॉर्म की शक्ति हम सबको एकता के धागे में बांधती है। मुझे पूरा विश्वास है कि समृद्ध अनुभव और प्रतिभाओं के बल पर आप सभी नागालैंड को और भी मजबूत बनाने के प्रयास में योगदान देंगे। आज की रैली में मौजूद सभी संस्थाएं जैसे कि स्पर्श, रिकॉर्ड ऑफिसेज, सेंट्रल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, बैंक, मेडिकल अथॉरिटीज एवं अन्य संबंधित संस्थाओं के अधिकारी आपकी शिकायतों को तत्काल दर्ज कर उनका पूर्ण निवारण सुनिश्चित करेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं को बिना संकोच हमारे सामने रखें। डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स द्वारा पब्लिश जो हैंडबुक है, हैंडबुक 2026 की कॉपी पक्का आप अपने घर ले जाएं, ताकि आपको लेटेस्ट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स की भी जानकारी मिल सके। मैं सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने देश के कोने कोने से आकर इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया है। विशेष रूप से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पूर्व सैनिक समुदाय को प्रदान की गई पूर्ण सहायता
कि मैं प्रशंसा करता हूँ। आप सबसे मैं एक बार फिर करना चाहूँगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आप केवल एक्स सर्विसमैन रैली का इंतजार न करें। हम हर हमेशा यहाँ मौजूद हैं, हम सब आपके लिए ही हैं और आपकी जो भी समस्या है इसका हल करना हमारा कर्तव्य है। अंत में मैं आप सबका आपकी अतुल्य सेवा, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय सेना आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। आप हमारे लिए गौरव हैं और हमेशा रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और तगड़ा रहो। अब GSPO से निवेदन है कि वे माननीय पर्यटन मंत्री श्री तमजन इमनालोंग को हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए निर्धारित ऑपरेशन सद्भावना के तहत टूरिस्ट बस सौंपें। Minister of Kingdom. थैंक यू सर। सभी को बताया जाता है कि इस ESM रैली की सक्सेस के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से 2 लाख रुपयों की फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ की स्टेज और एरिना सेटअप के लिए दी गई है। अब मैं माननीय गवर्नर श्री नंद किशोर यादव से निवेदन करता हूँ कि वे रैली को संबोधित करें। Honorable Tourism Minister, respected SPR, Corps Commander, distinguished officers of the Civil and Military Administration, reward veterans, Veer Nari, and the proud family of our brave soldiers. On behalf of the people of Nagaland, I extend my heartfelt appreciation and a very warm welcome to all of you to this momentous Ex-Servicemen rally. Your presence here today adds immense dignity and meaning to this gathering as we honor those who have served the nation with unwavering courage and devotion. The Indian Army has also exemplified the highest standard of professionalism, discipline and compassion. Its unwavering commitment to the welfare of ex-servicemen, Veer Nari and their family is truly admirable and worthy of the highest praise. Events such as this rally reflect the Army's proud traditions of care, camaraderie and lifelong support to its own. It sends a strong and reassuring message to every soldier that the nation never forget those who have served it. Here in Nagaland, we stand united with the rest of the country as we reaffirm our commitment to stand firmly beside the veterans, Veer Naris and their families, ensuring
ensuring that their sacrifices are remembered with respect and gratitude for generations to come. Our veterans and we Naris are truly the living legend of our nation's freedom and security. Their stories of courage, endurance, and sacrifice are not merely chapters of history. There are enduring sources of inspiration for every citizen of this country. The sacrifices made by our soldiers, often in the harshest terrain and under the most challenging circumstances, cannot be measured in words. We are able to sleep peacefully because the armed forces are guarding our borders. It is therefore our sacred responsibility as a nation and as a society to honor them, support them, and ensure that their dignity and well-being remain a priority. Being in your midst today fills me with deep inspiration, and it reminds us all of value of duty, honor, and selfless service that Indian Armed Forces represent. I would also like to take the opportunity to convey my sincere appreciation to the Indian Army, particularly the Spear Corps, for organizing this exemplary initiative. My thanks also go to the various institutional representatives and organizations who have travelled from far and wide to participate in this rally and extend their support to the ex-servicemen community. I would also like to place on record my special appreciation for the state administration of Nagaland for its steadfast support and continued effort toward the welfare of our veterans, we Naris and their family. Such collaboration between the civil administration and the armed forces greatly strengthens our ability to serve those who have served the nation. In conclusion, I once again salute each one of our veterans and we Naris for their unparalleled service, courage, and unwavering devotion to the nation. Your sacrifices have safeguarded our freedom and strengthened the foundation of our democracy. The people of Nagaland, together with the Indian Army and the entire nation, will forever honor and cherish you as our pride and inspiration. मैं अब एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी मेरे पहले के कुछ वक्ताओं ने आपकी समस्याओं के बारे में मुझे अवगत कराया है, मैं अपनी सीमा में रहकर उन समस्याओं के समाधान के लिए भी व्यक्तिगत रूप से प्रयास करूंगा, इस बात का वचन आपको देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।